Okay, so we are live. Excellent. Let me just check because I'm live. So, how is everyone? Assalamu alaikum. Welcome back to another live session. How is everybody? How's everyone doing? It is a terrible weather, and I can understand how difficult it is right now. The situation is getting worse day by day, and it's just been a difficult journey right now. So please, everybody, be careful because after Eid, the ratio of some viruses, the people with virus have increased way drastically. So we have to be very careful. So I hope everybody is following all the SOPs and trying to maintain the social distance. With that, I am really excited. I think everybody is bored now with me saying I'm very excited because whatever I do for the page, I am excited all the time. But today, I am excited because today is a topic that I want to know about as a psychologist, as a mother, as a normal human being. That why do we tend to get obsessed about someone instead of taking care? Why taking care? What is that fine line in which we cannot differentiate between when are we taking care of the person or when are we getting obsessed? And I think I personally, if I talk about myself, I do have that tendency that I do when I take care. I sometimes do get obsessed and I don't even realize that. So today we are going to talk about and revolve our session around that. One bad news is that Rida might not be able to join us because she is having some electricity issue since morning. So she is bichari stuck in that situation. But she has messaged and given us the message that whenever the light will come, she will join us. So, but other than that, we have the another co-founder of the circle, Tooba. So it is a powerhouse today. Two Toobas are going to do a session. So let me welcome her, and she will talk about herself first, and then we'll go to the session. Hello, Tooba. Hi, Tuba. How are you? I'm fine. How are you? I'm good too. Can you see me well? Can you hear me well? Yes, I can. Okay. And if those who are watching the session, if you can hear us and see us clearly, do comment. So, Tuba, thank you first of all for joining us. And can you tell us about yourself a little background? Okay, sure. So I'm a clinical psychologist, and I've been practicing for over like 4 years in the field of therapy and psychology. I've worked with children, I've worked with special needs children. I've mainly been working with adults since the past 2-3 years. Currently, I am one of the co-founders of the Circle, along with Rida and another one of our partners, Nazneen Tayyab. And I also have a private practice in which I cater to mental health needs of adults mainly. Okay. And those who haven't checked out the circle, please do. They have their Instagram page, the Facebook page. They're doing excellent work. And I love your live sessions. Recently, one I Thank you. really enjoyed the one with Mandala and you did it with Nirmal. I Nirmal really Yadu, right? enjoyed that. Thank So you. you Thank guys you are so doing much. great. Thank you. Thank you. Okay. So, Tuba, let's start with talking about codependency. So, Okay. can you tell us what codependency is? Okay, so let's start with generally what that term means. Yeah. Codependency, obviously, naam se bhi samajh mein aa raha hoga audience ko, कि it's about when you become dependent on another person and that person is also dependent on you, right? So it's mutual dependency on each other. ये जो है हम लोग आज तो स्पेशल नीड्स और उनके पेरेंट्स स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन एंड उनके पेरेंट्स की बात करेंगे इन रेफरेंस टू दैट स्पेसिफिकली बट कोडिपेंडेंसी कैन एक्चुअली अकर इन एनी रिलेशनशिप any Yeah. relationship in which you are looking at कि जो दूसरा बंदा है वो मेरी needs fulfill कर दे मेरे लिए और the other person is looking at you in the same way. So जैसे Yeah. romantic relationships में एक बहुत I think it's becoming a little bit obsolete now लेकिन वो दो जिस्म एक जान वाला जो concept है कि you know कि we will become one and we have to grow as one. That is what essentially codependency is about. Okay, you don't have independent, mindsets of your own. You're not independently growing. You are growing as one unit, which can be very detrimental, not just for adults but for children as well.
अगर हम specifically parent child वाली relationship में देखें तो especially in our culture codependency is very rampant because parents का अपना जो भी for instance self esteem issues होते हैं या control issues होते हैं that maybe they never got the control, so they exert those things on their children, so they try to fulfill those needs through their children कि यहाँ पे this is where I can assert some control, so उनकी dependency उस तरह से वो fulfill हो रही होती है. And secondly, the children, because obviously they're dependent on their environment anyway by default, because they don't have that क्या कहना चाहिए, they don't have the capacity to be independent yet, so they rely on their parents anyway, right? So us sense mein codependency is generally very rampant, especially in the parent child relationship in our culture. Yeah, absolutely. So Tooba, can you elaborate a little bit on how parents can do develop this, and Okay. how is it different from like a romantic relationship, how parents can develop that for children especially? So it's very interesting because हम लोग जब भी in relationship समझते हैं किसी भी mental health issue को या mental health की कोई भी phenomenon को, so हम उसको in relation ही देख रहे होते हैं. As a psychologist, I can tell you that when we are looking at even relationships, you are looking at two individuals, and you see then why is someone acting a certain way in this relationship based on their own experiences, their own life. Right? So if we talk about why parents become codependent on their child, so abhi jaise maine ek do mention kiye the abhi ke maybe it's a lack of control of their own environments, kyunki hum log if you know this, if you're living in this culture you will know this ke aapko independence जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक नहीं मिलती, और अक्सर उसके बाद भी you fail to have a certain level of control or autonomy over your own self. Secondly, we are being raised in a very emotionally stunted culture in which we are told that ye specific emotions hain that you can show, and the rest of the range of emotions that you have as a human being, they're not going to be acceptable. So even in that, we are told कि इस तरह से behave करो, and any other behavior from you will be unacceptable. So when we have children then, that is an area where it's seen that, okay, this is somewhere where I can exert my control because this is my child, right? And so wo jo apni need unfulfilled hoti hai of being autonomous, you then kind of try to pacify it by controlling the life of the child. Yeah. Does that in a way make sense? Yes, absolutely. Like you project your unfulfilled dreams and desires on your child. बिल्कुल. So the child is like a proxy for your emotional outlet basically. इस तरह से एक वो situation बन जाती है. Okay, so Tooba, if a parent has developed this codependency, how will that affect their own mental health first and then the child's? Okay, so अभी जैसे हमने बात की, it's a proxy that they're seeing their child as, right? Which means that they're not actually acknowledging their own emotionally stunted growth, or their own flaws or weaknesses or issues, mental health issues specifically. And so what they're doing is they're pushing that onto the child, and now they've made the child the object that they need to fix, which is detrimental for them. One, because वो अपने अंदर ये चीज acknowledge नहीं कर रहे हैं, so they're not helping themselves. It's like saying कि अगर आपको कट लगा है और उसका wound आपको ठीक करना है, लेकिन आप जा रहे हैं और किसी और के wound को ठीक कर रहे हैं, and you're ignoring your own wound. Right? So उसका wound शायद ठीक हो जाए, लेकिन आपके wound पे infection होके, and then it can get really, really bad actually. So it's one of those situations where you are not acknowledging what you've gone through, what traumas you may have gone through, and because you're not acknowledging it, you can't do anything about it. It's as simple as like कोई भी physical ailments होती हैं कि आप जब देख ही नहीं रहे हैं कि नहीं दर्द नहीं है, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक चीजें ignore होती हैं, फिर बड़ी होती हैं, and then ultimately they can become even bigger problems. So exactly the same thing then we can apply in mental health. So that's usually what happens with parents. And if we're talking about children especially, it can be very frustrating, and even more with special needs children. Why? Because hum log yahan especially, it is an assumption that children with special needs are not able to say what they need, right? Which means the parents need to try to guess what they might need. And वो जो guess कर रहे होते हैं वो ultimately अपनी ही needs दूसरे बच्चे पे project करके और वो ही fulfill कर रहे होते हैं, rather than maybe what the child would want. So parental mental health in this situation, I think, kind of goes down, and you can see that because
especially like since I've worked with a lot of special needs children and their parents, because obviously you need to work in a holistic approach when you work with children. So usme you can see some parents are so frustrated. Yeah. They are so frustrated because obviously the way they're dealing with their own mental health needs is not the solution. So वो बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, कभी कभार उसको बेवजह डांटना, बेवजह मारना, उसको बेवजह पनिश करना for situations that could have been handled in a better way if the parents had been in a better mental health state, you know. Yeah. Yeah. So in that way, parents, I think, are suffering because they have these bouts of depression, maybe they have these bouts of anxiety, they have outbursts based on कि ओ इस बच्चे ने ये चीज पूरी नहीं की, which in fact वो बच्चे की जरूरत नहीं थी इसलिए उसने पूरी नहीं की, वो आपकी जरूरत थी तो आपको वो पूरी करनी है अपने लिए. So parents के लिए इस तरह से it becomes detrimental. With children, you need to understand, with children they're discovering the world, so they're discovering about themselves, they're discovering कि कुर्सी होती है तो वो क्या होती है, तो कुर्सी पे वो खड़ा होता है, कुर्सी को गिराता है, कुर्सी पे बैठता है, कूदता है. They're trying to understand होती क्या है कुर्सी. इसी तरह से that's how they're understanding mental different theories and stuff as well, कि अच्छा मैं ये emotion दिखाऊंगा तो क्या होगा, मैं इस तरह से react करता हूँ तो क्या होता है. So when children see कि चाहे वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, it's actually the parents who are controlling their life. The child loses a certain level of autonomy, which even children with special needs require. As a human being, if you are a human being, you require a certain level of autonomy, regardless of what your age, regardless of what your mental health capacities are. And so when those are taken away from you, so then the child may sometimes act like any, you know, जैसे गाय बकरियां होती हैं कि, you know, एक herd वाली एक mentality होती है कि अच्छा चलो जो बोल रहे हैं आप तो मैं वही करती रहूं. But at a certain point, it will also cause a rebellion in the child, which would result in disruptive behavior, which would result in tantrums. क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, उसको बताया गया कि उसको ऐसे चलना है, right? जो parents बोल रहे हैं वही करना है. But उसके अंदर से एक need है to be a little assertive, to be a little independent, और वो चीज़ दब रही है. तो the child is in a constant conflict within himself. और उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है that they don't take into account that the parents might be at fault there. They do a lot of self-blame, which then can lead into like long-term problems as well then. Absolutely. Yeah. Absolutely. And what I have observed as a parent and as a professional, that जो special needs के बच्चे होते हैं वो black and white तो नहीं होते, वो बड़े honest होते हैं. जो वो feel करते हैं, जो वो समझते हैं, वो है उनकी reality. जैसे बच्चों की तो हम उनकी reality हम बदल नहीं सकते. तो अगर हम से ये चीज autonomy like उनकी एक independence in thoughts को भी अगर हम उनसे छीनने की कोशिश करें, वो एक एंजाइटी आ जाती है उनमें. एंड आई हैव सीन दिस छोटी छोटी चीजों में भी, क्योंकि उनके लिहाज से जो वो कर रहे थे वो तो सही है, तो हमने क्यों मना किया, इसकी लॉजिक क्या है. और ये जो है ना, पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों को क्या है, उनको थोड़ी पता है, तो हमें उनको ये बात बतानी है. और अगर हम स्पेशल नीड्स बच्चों को पता होता है, बिल्कुल, अगर हम स्पेशल नीड्स के लिए भी स्पेसिफिकली बात ना करें, इन जनरल बात करें. जैसे अगर एक बच्चा आता है अपने पेरेंट्स के पास और बोलता है कि भाई मुझे तो अल्लाह मियां नहीं दिखाई दे रहे, मैं नहीं मानता, तो उस पे हमारा क्या रिएक्शन होगा? हम या तो बहुत गुस्सा करेंगे, तौबा करवाएंगे, हो सकता है एक दो चमाट भी मार दें, इतनी शर्मनाक बात की. अब हमने डांट दिया, लेकिन उसका क्वेश्चन तो रिजॉल्व नहीं हुआ. बिल्कुल. और उसमें उसको ये पता चला कि अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो मुझे मारा जाता है, मुझे डांटा जाता है, मुझे डराया जाता है कि ऐसे सवाल पूछोगे या ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें जलाया जाएगा जहन्नुम में. सो वो बच्चा और डर जाता है. तो उसने जो थोड़ी सी कोशिश की थी टू बी क्यूरियस, टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, टू काइंड ऑफ एक्सपैंड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग अराउंड देम, तो वो दबती जाती है. और मसला ये होता है कि वो सिर्फ दब रही होती है, वो खत्म नहीं होती है. सो इफ इट्स लाइक अ स्प्रिंग, आप कोई चीज दबाते रहते हैं स्प्रिंग को, ये नहीं मतलब है कि वो स्प्रिंग पॉप अप नहीं होगा. ये मतलब है कि आप जितनी जोर से स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ज्यादा वो शूट अप होकर और फिर वापस आता है नॉर्मल लेवल पे. सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स एक्चुअली. वेरी वेल सेड टूबा. वाकई ये बिल्कुल आई थिंक ये बिल्कुल सही मेटाफर है कि इट्स लाइक अ स्प्रिंग. हम लोग दबाते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारा बच्चा समझ गया है कि उसको ये नहीं. अब बच्चे के पास, अब आज की जनरेशन में बच्चों के पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम. So instead of getting it from the wrong way,
वी नीड टू बिल्कुल, बी। और यहाँ पे आई थिंक हम समझते हैं कि हम बच्चों को ऑटोनॉमी दे के अपनी ऑटोनॉमी एट स्टेक डाल रहे हैं। मुझे लगता या है कि पेरेंट्स यस का एक या मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि ये या बिल्कुल गलत है, ऐसा या नहीं है। Yeah, तो which again leads from their own insecurity, right? यस So this यस is their way of asserting their autonomy. तो अगर ये भी हाथ से चली गई तो फिर हमारी autonomy है कहाँ? हम अपनी independence कहाँ से दिखाएं? I mean, with women I know especially because I've seen so many women around me कि experiencing this issue कि शादी से पहले you're constantly told कि शादी के बाद करना ये, शादी के बाद करना ये, शादी के बाद करना ये. And then once you're married, you have extra responsibilities. You have a whole new family telling you that this is how it's run in our family. So then you're not actually freed from your house. कि हाँ शादी के बाद ये कर लेना. You actually have more responsibility to act in a way that other people want from you. या So उसमें ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं where you see your children as that kind of path क्या हाँ यहाँ से मैं अपना ये निकाल सकती हूँ. और ये by the way unconscious level पे हो रहा होता है. बहुत कम लोग ये समझ के कर रहे होते हैं कि हाँ मैं क्योंकि autonomy या independence कहीं और नहीं feel कर रही हूँ तो बच्चों पे निकाल रही हूँ. This is very unconscious level पे हो रहा होता है. Which is why, like what you said, we need to start understanding कि हम लोग अगर बच्चे को for instance डांट रहे हैं तो क्या वजह थी, किस बात पे गुस्सा है, हम क्यों इतना ट्रिगर हो गए. अगर उसने कह भी दिया कि अल्लाह ताला मुझे नहीं दिख रहे हैं तो हाउ कैन ही एग्जिस्ट. वो बच्चा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, राइट. सो आप ही तो उसको समझाएंगे. सो अंडरस्टैंड वेयर योर एंगर इज कमिंग फ्रॉम एंड इट विल रियली हेल्प इवन योर रिलेशनशिप्स. या बिल्कुल. एंड आई थिंक ये जो चीज है ना ये फिर वहीं से आती है, एज यू सेड, कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, अदरवाइज देन वी बिल्कुल वोंट बी एबल टू फिर तो हम लोग बिल्कुल मुश्किल अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट करते रहेंगे, चाहे वो बिल्कुल रिलेशनशिप हो किसी भी तरीके की, आपकी हस्बैंड बिल्कुल वाइफ की हो, बच्चों बिल्कुल से हो, कोई भी बिल्कुल रिलेशनशिप हो, बिल्कुल हमारी वो इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट होती रहती हैं. तो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल लाइक दैट. या तो हाउ अबाउट, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने तो फेस किया था विद पेरेंट एंड चिल्ड्रन, बट आई थिंक वी शुड take it as in general first, that how to know the difference between when you are either you are taking care or you are being obsessed. आई थिंक इसमें मैं बहुत बेसिक बात बोलूंगी जो सुन के लोग कहते हैं बस इतना ही. बट आई थिंक इट्स समथिंग वेरी बेसिक कि आप अपने आप से बात करें. स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ. एक इंटरनल हमारी एक जो आवाज चल रही होती है ना, एक नैरेटिव जो चल रहा होता है कि एक वो वर्ड्स आ रहे होते हैं, कभी इमेजेस आ रही होती हैं. दोज आर आवर थॉट्स. कभी कभार हम काउंटर थॉट्स भी दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन अगर मैंने ऐसे कर लिया तो. सो एक कॉन्वर्सेशन अंदर चल रही है, राइट. What we need to start doing as adults is that we start having an actual conversation with ourselves, knowing that this is something that we are able to do. So that is the first step of autonomy, where you don't let your thoughts just flow, but you start taking control of them in the sense that you start having these active conversations in your mind, rather than being like अच्छा चलो ये मेरे जहन में आया तो अब वो मैं ऐसे act कर रही हूँ. Make it something that you manage. Your thoughts shouldn't control you. You control your thoughts. कि अच्छा मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इसको इस वक्त जाके पिटाई लगाऊं क्योंकि इसने खाना नहीं खत्म किया हुआ है, मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पे. अगर उसने खाना नहीं खत्म किया है तो इसका क्या मतलब हुआ. Ask yourself that question. इसका मतलब हुआ कि शायद उसको भूख नहीं लग रही थी या he got distracted. तो क्या ये इतनी बड़ी बात है कि मैं जाके उसको मारूं. So ask yourself these questions. Have a conversation with yourself. अभी something that you said was very important कि जब तक हम अपने emotions को नहीं करेंगे सही तो we'll keep on projecting, right? लेकिन हम अपने आप को कैसे resolve करेंगे? By asking these questions. Again, this is like if you go to a doctor with some symptoms कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, खाने का दिल नहीं चाह रहा है, lazy feel कर रही हूँ. The doctor is going to ask you questions, right? कि अच्छा क्या ये चीज हो रही है, ये सिम्टम आ रहा है, अच्छा रात में हो रहा है, कब से हो रहा है, राइट, कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है. These are the exact questions you need to now internalize. The best way to understand yourself and even what the other person is trying to say, even with children, is by questioning. I think especially aajkal, I think the biggest flaw in the way we communicate is that we start giving our opinion. So it's not about what the other person has to say. It's about our opinion and getting that across, because our opinion is the most important, right? Internally bhi hamari jo thoughts aa rahi hain khud se, we think that that is the truth, that is reality, right? But our thoughts are just our perceptions. It's our version of reality. So that is something you should question. कि अच्छा, for instance, मेरी opinion है कि पानी ठंडा पीना चाहिए,
right? And I read lots of articles on it कि हाँ इस ठंडा पानी पीने से बहुत फायदा है. But you need to know that that's your perception and that there will be conflicting ideas out there. So that's exactly what you need to internalize now. कि मेरी सोच है कि ये एक चीज़ सही है कि मुझे अपने emotions नहीं दिखाने चाहिए, मुझे रोना नहीं चाहिए, ठीक है? It's not a good habit. जो रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं. Challenge that thought. And the way to challenge it is ask questions. Question yourself. कि कौन नहीं रोता, किस वजह से रोने को मना किया गया है, what will not crying achieve, how has it helped me to not cry. Ask yourself these questions. So that's the basic thing you can do. Start a conversation with yourself. अभी भी जो conflicts चल रहे हैं पूरी दुनिया में, I think we can see कि the main thing everyone is saying कि start a dialogue, start a conversation. दूसरों से पहले अपने से तो start कर लो. So I think that's the main way you can start understanding what is going on, so that you can start understanding कि मैं बच्चे का अब ख्याल रख रही हूँ या मैं उसके थोड़े से हक पे overstep कर रही हूँ या मैं थोड़ा obsessive हो रही हूँ in the way I'm parenting. Am I becoming a helicopter parent? So constantly question yourself. I think that's just the easiest way and the most basic fundamental way you can kind of keep yourself in check, honestly. Absolutely, and I think it's and with the example you gave about कि बच्चा जैसे खाना नहीं खा रहा है, तो जैसे बहुत सारी मदर्स मैंने देखा है अपने फैमिली में हर जगह के बच्चा जिद कर रहा है, तो अब बहुत सारी मदर्स ये सुन के कह रही होंगी भाई मेरा बच्चा तो जिद्दी है, उसको भूख लग भी रही होगी तो वो नहीं खाएगा. लेकिन आई डू क्वेश्चन देम कि कितनी बार पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि उसको भूख लग रही होगी और आपकी बम्बार्डमेंट से कि तुम तो सिर्फ जिद में नहीं खा रहे हो, जिद में नहीं खा रहे हो, हम उनको रिबेलियस बना देते हैं. This is तो very बच्चा ये कर important. लेता है, अच्छा आप ऐसे समझती है ना, ठीक है अब मैं नहीं खाऊंगा. Yeah. तो This is हम what's ये known मदर्स as जो है a ना ये रियलाइज self-fulfilling prophecy actually. इसको एक बहुत one of my favorite therapists जो थे उन्होंने बहुत जबरदस्त एक theory, very renowned, Carl Rogers, उन्होंने ये बात की थी कि आप बच्चे को अगर एक फीड करते रहोगे ना एक बात तो वो उसको अपनी इंटरनलाइज करके एक अपनी आइडेंटिटी बना लेगा. बिकॉज अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, राइट? व्हाइट बोर्ड है, अभी कुछ लिखा नहीं है. व्हाइट बोर्ड पे आप लिखते रहेंगे ना तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीज हो, तो व्हाइट बोर्ड पे यही लिखा होगा कि तुम बदतमीज हो. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद द चाइल्ड कि उसका अभी ब्लैंक है, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल ब्लैंक है. उसको आप बोलते रहेंगे कि तुम जिद्दी हो जिद्दी हो जिद्दी हो, तो वो कहेगा अच्छा तो दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू बी देन, राइट? आई एम सपोज्ड टू बी जिद्दी, तो वो जिद करके दिखाएगा बिकॉज दैट्स हिज आइडेंटिटी नाउ. So even then, the parent has actually pushed that identity on the child. And that's something very difficult for parents to accept because obviously in that respect, I think mentality पे ये हो जाती है कि ओ हम गलत हैं. But I think in that respect you need to understand कि नहीं, आप इंसान हैं, इंसान से गलतियाँ होती हैं. And that is something we all need to accept. As parents even, we should not be placing them on a pedestal because you've become a parent. Because before a parent, you're a human being. So you will be making mistakes. You are a flawed personality. You will forever be imperfect. And so just internalize that thing कि मैं इस बच्चे को क्या सिखा रही हूँ उसके बारे में. If it's wrong, so that's where you can grow. If you don't accept that you're doing something that's wrong or detrimental to your child, तो फिर तो ना आप grow हो सकते हैं, उल्टा आप अपने बच्चे को भी रोक रहे हैं growth से. बिल्कुल, क्योंकि पता है ये जो हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, मेरे ख्याल से टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो भी कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है. हर बच्चा वैसे आप अगर एक ही इंसान के 3 बच्चे हैं, जरूरी नहीं है तीनों के तीनों एक जैसे, और फिर वो कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है. तो हम लोगों की जो ये एक्सपेक्टेशन है ना, समटाइम्स हम बच्चों को क्या खाओ से ज्यादा कैसे खाओ पे फोकस कर रहे होते हैं. और ये चीज इम्पोर्टेंट है. बच्चा जो चिढ़ जाता है वो हमने उसको चिढ़ाया है बार बार, हमने उसको इतना एक फन चीज को भी हम इतना उस पे एक उसके लिए पढ़ाई बना देते हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई से भागता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम लोगों को एक तरीका आना चाहिए इस चीज को हैंडल करने का. आई थिंक ये जो इम्पोजिंग वे है ना, और बहुत सारी माएं रियलाइज नहीं करती, एज यू सेड, कि अनकॉन्शियस हो रहा होता है. ये हमारा नॉर्म बन गया है कि खाओ, अब खाना लग गया है तो खाओ भाई. उसको उस वक्त नहीं खाना, कोई बात नहीं. बच्चों के लिए तो यू नीड टू गिव देम अ लिटिल मार्जिन. Exactly. और इतनी autonomy तो हो. And I think you're one of the few parents, especially mothers that I'm talking to, who's coming up with these realizations, because it can be very वही self threatening हो जाता है ना कि मैं कैसे अपने बच्चे का कुछ नुकसान कर रही हूँ. But it's okay to accept that.
But like you said, routine एक बच्चे के लिए अच्छा होता है. It's healthy to have routine for kids because kids get very anxious if they don't know what's going to come next. So एक बच्चे के साथ मिलके आप एक schedule Okay. बनाओ जिसके अंदर फ्री टाइम भी हो in which they get to do whatever they want. उनको खेलना है, उनको ड्रॉ करना है, उनको सिर्फ लेट के टीवी देखना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है. The child needs that. It's extremely important for the child to know that yes, you also have a certain level of autonomy even if you are younger than me. And जैसे आपने कहा कि खाना लगा हुआ है तो खाना जरूरी है. I mean, वो भी एक इंसान है, अगर उसको भूख लगेगी तो वो खाएगा eventually. वो नहीं अपने आप को भूखा मारेगा. Kids and animals are not like that. When they're hungry, they will eat. When they're sleepy, they will sleep. You want to maintain a certain routine, but also give them that margin, like you said, कि कभी कभार वो नहीं हो पाएगा. So it's okay. It's okay. Stay calm. Yes. बिल्कुल सही. आई थिंक ये वो चीज है, और ये चीज है वो तुबा जो मैंने अपनी लाइफ में अपने साथ की है. मैंने अपने आप को वो स्पेस दी है टू मेक मिस्टेक्स, टू अंडरस्टैंड, take the responsibility of that mistake and then realize कि okay, if this is not working, how should I go about it. और जैसे my son is on spectrum, तो ये सब चीजें मुझे और देखना पड़ता है चीजें. अब I remember when I was in that state, when I wasn't realizing it and this was all unconscious. I remember I was sitting with this therapist और मैं बता रही थी कि ये भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, ऐसे. She was just looking at me, and at that time my son was around 4 years old. And she just looked at me and smiled, and I was like, what? So she said, do you realize you're talking about a 4-year-old child? Are you realizing? It's like you're talking about and you're expecting your 4-year-old to be a 16-year-old, perfectly, like with all the perfections. जो आप बोलो वो करे, बिल्कुल मोल्डेड बच्चा हो. स्पेशली एक वो बच्चा जो कि स्पेक्ट्रम में, वो तो और चीजों को एक डिफरेंटली ले रहा है. Then it hit me कि really यार, ये तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं. हम लोग सबको एक मैनुअल थमा दिया गया है ना बच्चे को करने का, जो सोसाइटी जैसे एक्सेप्ट करेगी कि बच्चा आता है तो एक जगह बैठता ही नहीं है, बच्चा आता है तो उसने तो मीठा खाया, सिर्फ उसने तो खाना तो खाया ही नहीं है. आपका बच्चा रोटी नहीं खाता, तो और ये पेरेंट्स ले रहे थे, अब कल से तो मैं इसको रोटी ही दूंगी. बिल्कुल. तो वो कॉन्स्टेंटली सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं, parents, and it's very real in our society. It's very, I think it'll be a very limited conversation if we don't talk about societal pressures in our culture, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, and it's very real. But I think especially our generation जो है, we're fighting it a lot कि लेकिन इसका फायदा क्या है, या इसके benefits क्या हैं, या इसकी ज़रूरत क्या है, why is it necessary. One very small thing that we do is ये control वाली बात, in which the child doesn't know that they have autonomy, they have control, they have the ability to give their consent. छोटी सी बात होती है, and they actually did a whole program based on this in Australia. I'm forgetting the exact name of the program, but it was wonderful. And so they talked about how when you give the child autonomy enough and show them that they have the ability to consent to different things while they are a child, they are then able to understand that when they are being threatened or when they are in a situation that they would not like to be, they have the ability, and they can actually say in those situations that I don't like this, or I don't want to be here. And one of the main ways is that कि अगर कोई आता है घर पे तो उसको प्यार करवाना होता है बच्चे को. अब बच्चा लड़ रहा है, नहीं जाना, प्यार नहीं करवाना. इवन दादी नानी से कभी नहीं होता है, वो खेल में लगा है, यार छोड़ दो बच्चे को, बट नहीं प्यार करवाओ, देखो नानी जो है अपसेट हो जाएंगी अगर प्यार नहीं करवाया. Now you're pressuring the child कि नहीं, जो बड़ा कह रहा है, I have to constantly listen to that. So even things that then grow up to become huge problems, why consent is such a huge problem in adults, it is tracing back to your childhood, that you were never given the right to have consent or have the ability to say no to things. So ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे हमें लगता है नहीं फर्क क्या पड़ रहा है. बड़े का जो है बड़े का दिल ना दुखे, तो बड़े को इतनी अकल होनी चाहिए कि वो इस चीज से ना दिल दुखाए कि बच्चा प्यार नहीं करवा रहा है उस मोमेंट में. And we are the adult in this relationship. We are the mature one. So उसमें सवाल ये आता है कि why are you so unstable or so insecure कि अगर बच्चा मना कर रहा है कि वो आपसे प्यार नहीं करवाना चाह रहा है या उस वक्त आपसे नहीं खेलना चाह रहा, तो आप क्यों इतना insecure फील कर रहे हो.
So there again, you need to have that conversation with yourself कि आप क्यों इतना insecure feel करते हो for 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, even 10 साल का बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है. What is that insecurity that they're tapping into? So again, it becomes self-work then. और मुझसे अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं कि अच्छा ठीक है तुम ये कहती हो कि इस पे इतना इम्पोज ना करें, तो कैसे बैलेंस करें कि बच्चे को हम ऑटोनॉमी भी दें, थोड़ी सी उसको इंडिपेंडेंस भी दें और कहीं कहीं ना दें. तो उन जगहों पे मैं एज अ मदर अपने बेटे को दे देती हूँ जहां मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं. जैसे आज जो तुमने कपड़े पहने वो तुम खुद चूज कर लो, चलो आई विल गिव यू दैट. तो उसको ना अच्छा लगता है उन चीजों में. अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें अभी खेलोगे या तुम पहले नहाओगे, तुम्हारी चॉइस. उन चीजों में मैं उसको फ्रीडम दे देती हूँ तो उसको वो बैलेंस आउट हो जाता है. कहीं ना कहीं उसको लगता है तो वो वाली चीजों में अब अक्सर वो मुझसे खुदा के भी पूछ लेता है, मेरी रिक्वेस्ट भी मांगता है, क्योंकि ही ट्रस्टेड मी कि आई एम ट्रस्टिंग हिम, आई एम ट्रस्टिंग हिज चॉइस. बिल्कुल, that's the message you sent to him. Yes, and he developed it, he picked it up without me training him. Absolutely, I didn't train him, I just gave him little bit of leverage that he has a choice in his life. Yeah, exactly. बहुत ज़रूरी That होता है. brings a big change, a Big big change. change. Exactly. Even for me, I am relaxed because I know that my son, if he's in dilemma, he is gonna ask me. Yeah, exactly. Because he knows that you're not trying to control him. You're there for him when Yes. needed. And then there are certain situations when he knows that, okay, I can do it and my mama is not going to get angry. And it's okay even if I express myself in these ways or whatever. So yeah, definitely. I think finding a balance between, what I choosing your battles. It's one of those things actually कि learning कि अगर ये बच्चे ने choose कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, so letting them choose, for instance, अगर 8 o'clock is bedtime, right? And हमेशा bedtime पे तो लड़ाई होती ही है. So maybe instead of fighting with them about it कि नहीं 8 बज गए, you have to go to sleep, give them an option कि okay, you know what, you can play for 5 more minutes or 10 more minutes. इस तरह से ज़्यादा they'll go 10 minutes over their bedtime, and even they'll get to choose. So like you said, giving them that options over things that are trivial or that won't matter, so the child knows that, oh okay, I get to express what I want in this. So it's a balanced growth hoti hai. And even as a parent, like you said, it's very calming to know that I don't have to control this child in every way. So एक sense of relief भी वहाँ पे grow होता है. I think यहाँ पे one thing that's very important is to grow those boundaries. So एक तो number one, choosing your battles, and the second thing is कि आप boundaries create करो. कि अच्छा, for instance, I know हमारे culture में especially co-sleeping is a lot of it's a huge thing, part of it. कि बच्चे जो हैं काफी बड़े होने तक अपने parents के साथ ही सो रहे होते हैं. So that physical boundary also needs to be drawn, so that the child knows that okay, at a certain age, I need to learn to sleep on my own. I need to be able to sleep independently, maybe in my room, in my bed. उस तरह से वो जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, they require a certain level of autonomy at each age, even by the way, starting from the age of 1, right? They want to be able to explore. वो बच्चा ऐसे ही सीखेगा. So आप जब उसको हैम्पर कर रहे होते हैं ना इन छोटी छोटी चीजों से, तो वो ग्रोथ रुक रही होती है, उसकी मेंटल ग्रोथ रुक रही होती है. So इस तरह से you need to start drawing boundaries. कि अच्छा, मेरी mental boundaries क्या है? Do I want to control this child 100%? No. What are the things that I can let go? Right? And usme first do your own boundary setting. Jisme, I mean, we can maybe have another session on this someday. Physical, mental, spiritual, social, digital, ये सारी आप boundaries अपनी create करें. And then sit with your child and do the activity. And you can do this activity with children of all mental capacities, of all ages as well, by the way. Because it helps them recognize as well कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. So it brings the humanness wala element, as opposed to bringing the, no, you have to fulfill all our expectations and just become like a robot for us. So I think setting boundaries is very, very healthy. Very important. And very important. And Tooba, do you think now the part you said they need to like एक independence की sleeping pattern भी हो, so do you think is it subjective or is there like an age, बस इसके बाद बच्चे को अलग सोना है? I mean, I won't put an age on it specifically, but I think it's हम लोग क्या especially जिस तरह से हो रहा था, I think at some points it can become very unhealthy for the child, because physical क्योंकि boundary नहीं draw हो रही है, so the child is not learning to let go physically of their parents, and then mentally and emotionally then also फिर वो generalize हो जाता है. So I think by like
I'm not going to put a number on it, but once you realize that the child is becoming a certain age, a certain way mentally, where they are trying to attain autonomy, you need to help the child to achieve that level of autonomy. If you can't give them a separate bedroom, तो आप at least उसका बिस्तर अलग करें ताकि उसको आदत हो अलग सोने की. वेस्ट में तो जैसे न्यूबॉर्न्स को ही वो अलग कोई कॉट अलग में रूम में सुलाते हैं, कभी अलग रूम में भी सुला देते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत फोकस होता है इस चीज़ का कि बच्चे को ऑटोनॉमी शुरू से दो. So maybe क्योंकि हमारे कल्चर में it's a collectivist society, we have a lot of different ideologies in the West, which is completely fine. But उसमें भी जब तक हम physically, mentally, emotionally अलग नहीं करते हैं बच्चे को, so then we can see the effects of that in our culture as well. I mean, I have a lot of adult clients coming into me and they have self-esteem issues because they don't know what they want. And if they know what they want, they don't know how to get it. And it's because their lives were continuously controlled by their parents, by joint families में थे, तो by their grandparents, by chachis, puppos, mamu, mamis, सबका तो से होता है बच्चे की जिंदगी में. So I think a level of autonomy is very needed, not emotionally and mentally just, but also physically, कि बच्चे को समझ आए कि मैं physically भी अगर अलग होता हूँ, it's not a big deal. It's okay if I grow physically besides being away from my parents too. And I think बच्चे के अंदर एक अचीवमेंट का एहसास भी होता है कि okay, I was able to do this without my parents. बिल्कुल, तो इसलिए फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है और बिल्कुल मेंटल ग्रोथ. बिल्कुल. अच्छा तो जो हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं कि भी प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशंस, तो हाउ पेरेंट्स कैन शुड नॉट डू इट. कोई कैसे हम एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज करें, लेकिन फिर हम कैसे ना करें प्रोजेक्ट. So I think some of the things that can kind of help is एक तो हमने जैसे वो बात कर ली कि realize करें through self talk, right? Secondly, what you can maybe do is when you're talking to the child, आप react ना करें. So there's a very slight difference actually between reaction and action. हम लोग अमूमन I think 99% of the time most people are reacting. Yeah, so we're reactors in which अगर हम स्पेशली बच्चों की बात करें तो कि बच्चे ने एक ग्लास पानी का गिरा दिया, हम रिएक्ट करेंगे कि ये क्या क्या तुमने, और ग्लास तोड़ दिया, कर क्या रहे, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसे नहीं खेलते हैं. It's a reaction. So it's based on कि आपको एकदम से गुस्सा चढ़ा इसके ग्लास गिरने से, and you reacted and you got the anger out. You didn't get the message across to the child that what you've done is not acceptable, but it's okay. Now what you've done is you've scared the child कि अच्छा मैं कुछ करूँगा तो मेरे अम्मा अब्बा जो हैं they'll turn into monsters. So in that respect, wait. There's this one thing that we do in therapy as well that we teach कि जैसे ही आपका कोई trigger हो ना, physically stop yourself from reacting and take a deep breath. Sometimes take one deep breath, sometimes stop yourself to do 3 deep breaths. Don't say a single word. Take 3 deep breaths and then आपका जो reaction होता है ना उसके opposite करो. So if your reaction is to get loud and start talking a lot, then what you need to do is आहिस्ते बिल्कुल like whisper में अपनी आवाज करके and literally slow your speech down. Literally do that. So actively आप बिल्कुल opposite करो उसका, so that आपके अंदर जो जैसा गुस्सा है वो थोड़ा सा deflate भी हो. And while you're breathing, think about what you want. So, अच्छा उसने glass गिरा दिया. Can that glass be fixed now? Do you want to shatter your child in response to the shattered glass now? Right? Yes. So ask yourself this कि क्या आपने कभी गलती से कुछ नहीं किया है क्या? किया हुआ है ना? So it's okay. गलती इंसान से ही होती है. So first calm the child down क्योंकि आपसे ज़्यादा वो बच्चा डरा हुआ है. क्योंकि जब वो loud noise होता है, that's a reflexive fear in all of us कि loud noise हो या कुछ टूटे, तो वो बच्चा खुद ही डर गया है अभी, ऊपर से उसको डांट पटने वाली है. So stop that at least. बच्चे को पास बुलाएं and first always talk to the child on their eye level. So if you're standing, that's very threatening for the child. Get to their eye level and make eye contact with them. Sometimes जब बच्चे परेशान हो रहे हैं तो वो eye contact नहीं कर रहे होते हैं. Make them feel safe. So physically touch them as well. Rub their back. कि what happened? Glass टूट गया था. Okay, it's okay. We're going to clean it up together now and just be careful next time. That is more than enough reprimanding for a child, especially depending on their age. If they're 4 years old, 5 years old, even 6, 7 years old, काफी होता है. इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को usually. But then remind them.
For instance, अगर वो फिर से कुछ carelessness show कर रहा है, तो then tell them, do you want to do that? Remember glass टूटा था ना? So do you think you should continue right now, or do you want to do something else now? Give them that opportunity to grow. So जब आप internalize करके अपने आप से बात कर रहे हैं, give that respect to the child as well. You are not above your child. You are not better than your child in any way. You do not know more than your child. It is astounding how much we can learn from our children. It is insane. Absolutely. It is insane. Yeah. So please see them as respectful citizens of your household and give them that respect. कि eye level पे आके उससे बात करें कि वो भी एक अहम इंसान है आपके घर का हिस्सा है. So give them that respect. और उससे you will see a completely different side of your child. बिल्कुल, and you have said it so well. And इस पे मुझे कितनी अच्छी एग्जांपल याद आ रही है. I teach at Karachi Grammar also. I remember there was this parent-teacher meeting, and I teach psychology and I teach biology. So in biology, there are some experiments that we do in lab. So there was this child who was naughty. I won't say बदतमीज. ये वही वाली बात है, हम खुद उन बच्चों को naughty से, curious naughty से हम बदतमीज खुद बना देते हैं. So he was naughty child. He wasn't a बदतमीज child. वो naughty था कि हो गया, अच्छा miss, I'm sorry, I'm taking responsibility. वो उस टाइप का बच्चा था. तो उससे एक test tube टूट गई थी. So his father came in the meeting, parent-teacher meeting, and मैंने उनको ये बताया कि आपका पढ़ने में तो एवरेज है मगर शरारती बहुत है. मैंने ये कहा. तो उन्होंने कहा अच्छा क्या किया इसने. तो मैंने बताया रिसेंटली इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब तोड़ दी थी. सो ही टर्न्ड अराउंड टू द सन, एंड सन बहुत आराम से चिल मोड में बैठा हुआ था. और पहले उन्होंने उससे पूछा क्या ये सही बात है, क्या ये सच ऐसा हुआ था. तो उन्होंने पहले उसको वो एक ट्रस्ट दिया कि तुम मुझे बताओ क्या ये सच है, कहीं ये ब्लेम तो नहीं है. और कोई एज अ टीचर और कोई और होता थ्रेट ले लेता वो एज अ थ्रेट. आई लव दैट. और उसने फौरन किया कि यस मिस, मैंने अपोलोजाइज भी किया था. फिर उन्होंने मुझसे पूछा डिड ही अपोलोजाइज, इज ही सेइंग द राइट थिंग. आई सेड यस. तो अब फिर वो जब उठ के जाने लगे, मैंने उनको अकेले में बुला के बोला कि देखिए जो आपने किया है ना, ये आपको पता नहीं है कितनी बड़ी चीज है. और इसी की वजह से आपका बच्चा इतना सिक्योर है विद इन हिमसेल्फ. बिल्कुल कि अगर कुछ टूट भी रहा है उससे, तो he knows कि he needs to apologize and fix it. And that security came because he was given that security. अब जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे इतनी अच्छी बात लगी कि अगर जैसे एग्जैक्टली ये एग्जांपल मैंने उधर पढ़ी थी कि अगर एक बच्चे से ग्लास टूट गया, what you need to do is instead of rushing towards and screaming at him, you need to first ask him, are you okay? तुम्हें लगी तो नहीं है? Yes. ताकि बच्चे को ये लगे अच्छा हाँ मेरी ज्यादा फिक्र थी देन ग्लास. Then the glass, exactly. ग्लास की अहमियत और औकात मेरी औकात से थोड़ी कम है, इतना तो उसको पता चल गया. फिर उन्होंने सोफे पे बैठा के कहा कि आप उससे पूछें कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, कैन यू टेल मी कि क्या. तो आपने पहले उसकी सुनी. और अगर हो सकता है बच्चा खुद ही बोल दे हाँ पापा आई नो आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, तो योर वर्क इज डन. Exactly, because you understood. आपको रियलाइज भी उसको कराने की जरूरत नहीं पड़ी कि उससे गलती हुई. और फिर आप उसको प्रेस करें एंड देन ही कैन गो. Also consequences. So this is how, and the way you said it, exactly what this is how it should be done. बिल्कुल. So instead of reacting like exactly the way you put it, instead of reacting, take it as a conversation, take it as an action कि अच्छा अब ये मसला हुआ है, अब इसका करना क्या है. So like you said, and I think it's very, very essential to giving respect to the child, is first asking them कि अगर ग्लास नहीं तो अगर हमारे यहाँ तो बहुत महंगे डेकोरेशन के पीसेस भी होते हैं ना, गलती से वो टूट जाए तो उसमें होता है तुम्हें पता था ये कितना महंगा था, मतलब so you're telling the child कि इसकी वैल्यू ये रही and आपकी वैल्यू ये रही because you know this was more pricey and you broke this and you're just the worst for breaking this. तुम बदतमीज हो, तुम ध्यान नहीं देते हो. तो उसको और आप self esteem issues create कर रहे हैं उस बच्चे में inevitably by showing them कि this object was more important than your mental well-being at this point, you know. बिल्कुल. I remember जब मेरा बेटा वो वाली एज में था कि वो लंबा भी हो रहा है, अब उसको हर चीज लेनी है और छूनी है. और स्पेक्ट्रम के बच्चों को तो टेक्सचर्स और एक्सप्लोरेशन उनकी तो ऐसी ही ज्यादा होती है. तो मेरा घर एकदम एम्प्टी था. वी हैड एवरीथिंग वुडन, वी हैड एवरीथिंग. ऐसा लग रहा था हम किसी नए घर में शिफ्ट हुए हैं. तो कोई भी आता तो ये कहता था तुम्हारा घर तो एकदम गोदाम और स्टोर रूम हो गया है, तो कुछ डेकोरेशन नहीं है. मैंने कहा इससे बड़ी कोई डेकोरेशन नहीं हो सकती.
आई थिंक हम इसको, मैं पहले इसको चेरिश कर लूं, फिर मैं डेकोरेशन भी कर लूंगी। तो पेरेंट्स को ना ये छोटी छोटी चीजें समझनी चाहिए कि वाक़ई, वाक़ई। हाँ, कि उसकी Yeah. बच्चे की अहमियत क्या है आपकी लाइफ में। You know अच्छा what? यहाँ We're पे talking about this. Sorry, या I'm just going to put in this one या point that connects to what we've been saying before. कि अहमियत बच्चे की समझनी चाहिए. शायद वो पेरेंट नहीं समझ रहे होते हैं क्योंकि शायद उनको वही अहमियत नहीं दी गई अहमियत थी. नहीं मिली, So नहीं it's मिली। like we're passing on the trauma from generation to generation. Okay, since I wasn't made to feel important, since I didn't get autonomy, so this is what I know of how you are supposed to raise children. So let me just do it this way. So वो नहीं होता है कि you're not educating yourself, you're not growing, या you're just या sticking to कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं बच्चे के साथ भी यही करूँ, वो भी ठीक ठीक ही निकल आएगा. बच्चे पल जाते हैं, that वाली जो एक लॉजिक होती है. बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एंड दैट इज़ वेयर अवेयरनेस और एजुकेशन आपको हेल्प करता है। जो बहुत लोग कहते हैं ना जरूरी. अवेयरनेस का फ़ायदा क्या है, ये फ़ायदा है। या ये फायदा है, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा तुबा, हाउ व्हाट अबाउट हाउ पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट, पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स समझते हैं ये क्या फ़ज़ूल बात है अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना। मेरा या बच्चा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होता विद द वीकनेसेस एंड व्हाट और शी और ही कैन डू विद या व्हाट ही और शी कैन नॉट डू। या ये चीज कैसे पेरेंट्स में डेवलप हो? आई थिंक इसमें अगेन वही हम लोग ने जो अभी बेसिक बात की कि मे बी दे वर नॉट मेड टू फील इट, सो देन दे डोंट नो हाउ टू बी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स अनदर पर्सन. इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट आई थिंक आई मी एंड रिदा स्पेशली वी हार्प ऑन अबाउट ऑल द टाइम, बट इट्स कॉल्ड कंडीशंस ऑफ वर्थ. और उसमें होता क्या है कि अगेन दिस इज कार्ल रॉजर्स की ही थ्योरी में से है कि ही सेड कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप वी आर थॉट कि अगर हम कोई कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी हमें वैल्यू दी जाएगी. सो इट कैन बी एज बिग एज कि आप डॉक्टर बनोगे तो आपको वैल्यू दी जाएगी, एंड इट कैन बी एज स्मॉल एज कि ये बैठ के इस वक्त अपना खाना खत्म करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा वो एक्सेप्टेंस, वो लव, या इवन अ स्माइल, even a shabash from your parents. Sometimes our parents don't even smile at it. कि जैसे for instance, a very key thing in this is, कि जब बच्चों के grades आते हैं, अगर उसका बी आ गया खुदा ना खास्ता, तो बी पे तो होता है तो मतलब क्या, पढ़ाई नहीं की थी तुम्हें, क्या हो गया है, कि उसका तो आ गया था तुम्हारा क्यों नहीं आया. So you're showing the child कि I am worth nothing until I get an A. A. And So you're talking about D na too, but students get scolded on an A because it's not an A star. इट्स नॉट अ गुड ए स्टार्ट. बिल्कुल बिल्कुल. सो आपके जो एक्सपेक्टेशंस कह लें या कंडीशंस कह लें कि जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे तो बच्चा जो है इट्स फीलिंग लाइक मैं वैल्यूड नहीं हूँ इस घर में. So I think the first thing you do is check your own conditions of worth and see which ones of those are you passing on, because ultimately आपकी जो भी relationship होती है, I'm not even going to stick with the parent-child relationship right now, any relationship, romantic हो गई, friendly हो गई, familial हो गई, any relationship that you are in, you are constantly projecting some of what you have experienced. And so if you have grown up, and especially हमारे culture में, तो we are constantly growing up with these conditions के कि इस तरह से तैयार हो गए तो सही एक्सेप्टेड हो गए, इस रंग के हो गए तो एक्सेप्टेड हो गए, इस उम्र में शादी होगी तो एक्सेप्टेड हो गए. हम तो इसी से बाहर नहीं आ रहे हैं. हम बाहर ही नहीं आ रहे ना. सो वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली पासिंग इट ऑन टू डिफरेंट जनरेशन. सो वी नीड टू चेक आवर कंडीशंस ऑफ वर्थ. कार्ल रॉजर्स ने बात जो की थी, ही सेड कि अगर कोई भी बच्चा हो, कोई भी पूरी दुनिया से कोई भी बच्चा हो, अगर उसको 3 चीजें मिले, एक मिले एक जेन्युइननेस कि पेरेंट्स जेन्युइनली शो करें उसको लव. सेकंड इज एम्पैथी. एम्पैथी इज जस्ट जो हम लोग अभी पूरी जो बात कर रहे हैं कि बच्चे को अंडरस्टैंड करो. आप ये समझो कि बच्चे का भी एक से है, एक माइंड, एक पूरा प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, वो समझो. सो एम्पैथी. एंड तीसरी चीज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. So you don't place conditions, you tear those away and you show कि तुम चाहे खाना खत्म करो ना करो, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, तुम्हारी शादी हो ना हो, we still love you. And you need to, हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हमें लगता है कि तो उसको पता नहीं है कि हम उसके माँ बाप हैं, हम प्यार में ही तो ये कर रहे हैं. माँ हूँ तो प्यार तो करती हूँ, प्यार तो करती हूँ, बट वो प्यार दिखाएं भी तो. hug your child, kiss your child, tell them, say the words that I love you. हमें इतनी हिचकिचाहट होती है एक दूसरे से ये बोलने. Like when's the last time you must have said, I love you to your own parents, hugged them, or cuddled with them, or sat with them, played games with them. So these ways of showing love हम लोग नहीं कर रहे होते हैं.
और अज्यूम कर रहे होते हैं कि दूसरा वाला बस समझ जाए कि हम कितना प्यार करते हैं और ये हमारा प्यार कराने का तरीका है. सो व्हाट यू आर टेलिंग द चाइल्ड इज आई लव यू बाय creating this dependence on me and lowering your self-esteem. That is highly toxic. That is not a loving relationship. That's a toxic Not at all. relationship. Yes. So if it's a loving relationship, in loving relationships, you appreciate each other, you understand each other, and you show the love. You show it through gifts. You show it through physical contact. You show it through emotional support. कि okay, I'm here for you. Exam में fail हो गए तो क्या हुआ था? What happened? Tell me what stopped you from getting good grades. What can I do to help you? What do you need from our side? Have these conversations that show your love, not your anger. So I think focusing on what conditions, number one, we grew up with and shedding those so that we don't pass it on, and keeping in check that we are not passing them on. Because again, I will say हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग के भी जब बच्चे हैं तो we are passing on certain things because we are humans. We are not going to be perfect at any point in our life. This expectation अगर हम अपने दिमाग से अपने लिए निकाल दें तो automatically ये हम दूसरों के लिए भी निकाल सकेंगे. Perfection is not a goal any of us can achieve. It needs to stop being a goal. Yeah, बिल्कुल. I think So ये जो yeah, acceptance वाला जो मेरा question था, ये बिल्कुल the way you have explained it is the right way, that yeah, you need first accept yourself first and then you're going yeah. to accept others, और आपको दूसरों के बिल्कुल, इमोशन समझ आएंगे क्योंकि बिल्कुल, आपने अपने बिल्कुल, आप को वो इजाजत दी कि ठीक है, हो गई तुमसे गलती, तो बिल्कुल, हम दूसरों को बिल्कुल. भी दे पाएंगे, स्पेशली Yeah, आर चिल्ड्रन. yeah. It's one of those things. I think इसकी एक एग्जांपल अगर दिया जाए कि जहाज में जब आपको वो सेफ्टी का नहीं बता रहे होते हैं कि ये करना है, जहाज अगर वो होता है तो बोट्स खुलती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसमें जो वो ऑक्सीजन मास्क वाला आता है तो वो बताते हैं कि पहले आप अपना लगाएं, उसको अपना टाइटन लगाएं. करें, फिक्स करें, फिर बच्चे को हेल्प करें या बराबर में अगर किसी को हेल्प की जरूरत है. सो व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज इफ यू कैंट ब्रीथ प्रॉपरली तो आप दूसरे को भी सही से नहीं हेल्प कर पाएंगे, आपको नहीं नहीं कर. पता होगा उसको कैसे करना है. So once you can think clearly, once you can breathe clearly, that's when you can then pass that on. So it's just one of those things, like you said, कि अपने आप को Yeah. समझें, अपने आप को improve करें, and then work on even your child. Yeah. I think जो मैं आने वाले 2 क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे से इसी में समराइज हो गए. एक तो कि अपनी फीलिंग्स को समझने की इम्पोर्टेंस क्या है, देन बिल्कुल. अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड, Yeah. and then how parents can create that healthy relationship with the children. I think this is how they can. So बिल्कुल. do you want to say something regarding this, just to create this healthy relationship? Yeah, I think I think हम लोग की जो पूरी बात अभी तक हुई है कि instead of staying stagnant in एक positive psychology में terms होते हैं having a fixed mindset जिसके अंदर आप बस focus हो गए कि अब मुझे इतना पता है और मैं इसी में पूरी जिंदगी अपनी काट लूंगी. हमने यही सीखा है, यही है बस. Having a growth mindset is what we need to start focusing on, which we start educating ourselves more. We start having conversation and dialogues more, even with people who have completely opposing views. Talk to them, see what is the reason they have that view. Maybe you can learn something out of it, right? So one thing I would suggest is start being more open. अगर आप बंद रहेंगे आप नहीं सीख सकते हैं. So that's the whole concept of having an open mind, कि आप सीख सकें. So start educating yourself, read self-help books, there's so much information online now at the tip of your fingers. So there's no excuse to not be able to read articles नहीं पढ़ने. There's YouTube भरा हुआ है on such amazing videos of all sorts. Animated हैं, technical हैं, वो experts कुछ बता रहे हैं, हर किस्म की videos हैं. Go start watching those. Then start tapping into your support network. हमें अक्सर लग रहा होता है हम अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन you have your family, you have your friends. If you don't have them, so then build it. Your support network is essentially what you need to start relying on and using that resource to help you keep your mind clear. So you should have good friends, then friends you can just have fun with, and then friends you can just catch up and थोड़ी चीजें के लिए कि oh that's just the person I go cycling with, or या मुझे art की कोई बात होती है तो सिर्फ मैं उससे तब बात करती हूँ. So create different niches, create different groups that you can tap into when you need it. And if you really need to go and you feel like you really need to work on yourself, so then go to therapy. Therapy एक गुनाह नहीं है, therapy एक life sentence नहीं है. Therapy का बिल्कुल नहीं मतलब कि आप बिल्कुल कोई you've lost your mind and there's no other solution for you. Therapy is like going to a doctor.
आपको जॉन्डिस हुआ है, आप डॉक्टर से जाएंगे, कंसल्ट करेंगे। आपके हाथ पे वुंड लगा है, आप जाएंगे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इसका ये नहीं मतलब है कि आप मर रहे हैं या आप फिजिकली बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कभी नजले जुकाम से भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू सी थेरेपी एज, कि कोई बहुत बड़ा मसला होना जरूरी नहीं है। नहीं इफ यू आर है। जस्ट कंफ्यूज्ड, इफ यू नीड सम गाइडेंस, इफ यू जस्ट नीड टू हैव एन आउटलेट जहाँ पे आप आके अपनी भड़ास निकाल लें, that is what therapy is for. So we need to start tapping into that resource, because we have some wonderful therapists working. There's so many places that are providing online therapy, so that, you know, convenient to clients ke liye, and who, the people who want to take it. Try out free consultations as well if you're not sure if you want to get into it. Try out free consultations to see कि क्या इसका benefit क्या होता है. So try doing all of these things, and then, you know, छोटी छोटी चीजें that make you happy, focus on that. One of the basic things is कि मुझे किस चीज़ से खुशी होती है, किस चीज़ से मुझे लगता है कि I'm in control. Start doing those things, whether it's painting, whether it's exercise, whether it's meditation, whether it's having a routine for yourself, you know. Start doing those things so that you feel a sense of autonomy in your life, चाहे वो थोड़ा सा हो और चाहे वो और ज़्यादा आप control अपना achieve कर पाएं. So yeah, I think these are like the basic things I would push right now. Absolutely. Anyways, thank you so much, Tuba. It was lovely talking to you, and thank you Thank you for for giving having so much time for my page. And me. I hope that members would Yeah, have benefited so much. I hope so And too. I hope so too. yes, Thank and you so all the much for best. having me. I'm glad you could give us time. Yeah, for sure. I'm always up for these things. Thank you so much, Tuba. Take care. Thank you. You too. Thank you. Okay, so this was Tuba from the Circle. Again, जिनको नहीं पता है the Circle के बारे में, please do check out their pages. They are doing very good work, and they have a very good team of very excellent professionals. Unfortunately, Rida couldn't join us, and I missed her. But anyways, if you have any queries, any questions, you can comment, and she will respond to that. Other than that, I hope कि आप लोगों को ये session से helpful हुआ होगा. एक चीज जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, बहुत सारे पेरेंट्स, अगर मैं पेरेंटिंग पे कोई सेशन करती हूँ, उनको ये लगता है कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि सब पेरेंट्स गलत हैं, पेरेंटिंग गलत ही करते आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मैं खुद एक एज अ मदर कह रही हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं, और ये मैंने सीखी हैं अपने तरीकों से, अपनी मिस्टेक से. जितना मैंने उतना दूसरों के मशवरे से नहीं सीखा, जितना मैंने अपनी गलती से सीखा. मैं एक बेहतर माँ अपनी गलती से हूँ, दूसरों के मशवरों से नहीं. तो अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें, अपने आप को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें कि आप में जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूज करें एज अ मदर. आप में जो वीकनेसेस हैं उनको थोड़ा सा साइड पर रखें, उस पर काम करें. अगर उस पर काम करने के लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, आप ढूंढें आपको क्या लगता है किससे आपको वो हेल्प मिल सकती है. अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसमें डिस्कस करें. अगेन एज तूबा सेड, ये गुनाह नहीं है, मदद मांगना गुनाह नहीं है. तो तो प्लीज अंडरस्टैंड करें कि इस तरीके के सेशंस जो हम पेरेंटिंग पे बात करते हैं, हम किसी की पेरेंटिंग को गलत नहीं प्रूव करना चाहते. हम ये बताना चाहते हैं आप और बेहतर कैसे हो सकते हैं. कभी कभी हम खुद रियलाइज नहीं करते हैं और हम ऐसा कर देते हैं. हमारे बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत ही ऐसी कच्चा क्ले है. मैं आके उस पे अपनी बम्बार्डमेंट कर दूं, वो थोड़े से डिसमोल्ड हो जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं पता क्या हुआ मेरे ऑफिस में, मेरे बॉस ने मुझे डांटा और मैंने आके अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल दी. और उस बच्चे ने क्या किया था, सिर्फ ये किया था कि उसने होमवर्क करके नहीं रखा था और मैंने ही एक्सपेक्ट किया हुआ था, तो मैंने उस पर सारा इल्जाम लगा दिया अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन का. दैट इज रॉन्ग. दैट इज वेयर द पेरेंटिंग गोज रॉन्ग. तो हम सब बेइंतहा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, तो क्यों ना यूटिलाइज करें उस प्यार को इन अ मोर पॉजिटिव वे, इन अ मोर प्रोडक्टिव वे. जो चीजें हम एक तो जो हम बेहतरीन पेरेंट और माँ बनने की कोशिश करें ना, नहीं बने, क्योंकि नहीं हो सकता. कोई परफेक्ट नहीं है, कोई बेहतरीन नहीं है. आप मुझे कोई एक बेहतरीन माँ बता दें. कैसे पता आपको बेहतरीन माँ है? क्योंकि वो ऐसा दिखा रहे हैं. आप उनके साथ रहना शुरू कर दें तो आपको अंदाजा होगा कि कोई बेहतरीन नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं, सबके बच्चे इम्परफेक्ट हैं, एंड इट्स ओके. वही इम्परफेक्शंस, ये बहुत ही गलत वर्ड है वैसे, उन्हीं डिफरेंट जो पर्सनालिटीज हैं उनके साथ रहना कैसे है, दैट इज हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप.
और मैंने एक जगह पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात, कि पेरेंटिंग का सबसे सक्सेसफुल असूल ये है कि आप किसी भी डिस्कशन में सबसे आखिरी में बात करें। अपने बच्चों को पहले बोलने दें, फिर आप अपनी राय दें। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आपने सबको वो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी दी और सबको ये फ़ील हुआ कि हमें सुनने वाले हमारे माँ-बाप हैं। देन दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि आपको उनके नज़रिए का अंदाज़ा हुआ। इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग कि आओ बच्चों मैं बताता हूँ तुमसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि तुम ऐसे हो, तुमसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि तुम ऐसे हो। तो आप उनके साथ बैठें, उनको बताएँ कि बेटा तुमसे ये हो गया, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वो खुद बताएगा कि उससे गलती हुई है। अगर उसने ये बताया आपका काम हो गया, आपको उसको ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको तब एप्रिशिएट करेंगे कि गुड फॉर यू दैट यू रियलाइज़ दैट यू हैव मेड मिस्टेक एंड आई कैन ट्रस्ट यू दैट इन द फ्यूचर आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे बिकॉज़ यू हैव रियलाइज़्ड दैट। तो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी अम, उनकी जो मासूमियत है उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ उनके साथ मिंगल होने की कोशिश करें इन अ वे जो कि हमने उन्हें आज डिस्कस किया। छोटे-छोटे चेंजेज़ लाने से बहुत बड़े-बड़े चेंजेज़ आएँगे इन योर चाइल्ड। ट्रस्ट मी आपका बच्चा ज़्यादा ही और शी विल फील मोर सिक्योर विदिन द स्किन। दैट इज़ आवर मेन गोल। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक देम परफेक्ट, ये गोल चेंज करते हैं अगर ये गोल है। वी आर ट्राइंग टू मेक देम comfortable, secure within their skin, that they will feel proud in themselves no matter what kind of a mental capacity they have. So on that note, I hope आप लोग छोटी छोटी चीजें try करेंगे and do give us that feedback also. So inshallah, I'll see you all in the next session. Till then, take care. Allah Hafiz.